you like to make a difference in people's lives by making them smile, by making them happy. You're inherently an entertainer. मेरे लिए क्या बहुत जरूरी मुझे लगता है कि जंग नहीं लगना चाहिए एज अ क्रिएटिव पर्सन. सो वेदर आई डू इट इन वॉइस ओवर्स और आई डू समथिंग ऑन एडवर्टाइजिंग या मैं फिल्म के थ्रू या ओटीटी हो गया या यू गॉट कीप योर गियर्स एक्टिव. सिद्धार्थ आनंद की जो फिल्म आई है पठान फॉर एग्जाम्पल है, जिस तरीके की कामयाबी उसने हासिल करी है, एक जवाब था मेरे ख्याल से लोगों का कि बॉस जोड़ने की बातें करो, तोड़ने की बातें मत करो. हिंदुस्तान के लोगों को दो चीजों से बहुत लगाव है, एक है माँ और दूसरी है सिनेमा. और ये दो चीजों का इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है. ऑब्वियसली द फिल्म वाज a great entertainer, and Shah Rukh did a great job. He had a new image in Avatar, which we haven't seen him in. I really love him. I think he's the most charismatic, well-spoken guy we have. You're an amazing dancer yourself. जब आपने वो झूमे जो पठान पे फिल्म के एंड में जो जो थिएटर में जिस तरीके से लोग डांस कर रहे होते हैं, आधी पिक्चर तो मुझे सुनाई नहीं दी. लोग चिल्ला रहे हैं, सीटी मार रहे हैं, एंड में तो सब पूरा वो स्क्रीन के आगे कुछ 100 लोग डांस कर रहे थे वहां पे. इट वाज अ सेलिब्रेशन एंड यू कुड सी दैट, एंड आई वाज आई वाज अमेज्ड. आई लव्ड इट. जावेद भाई, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा. कैसे हैं आप? कनेडा एज ए कनेडा. कनेडा. ओके, या ग्रेट, एंड गुड टू सी यू आउट देयर. एंड आई होप दैट तुम वहां पे हंगामा अपना मचाओ. दूसरा एक हंगामा यहाँ था, तुम्हारा अपना खुद का हंगामा मचाओ वहां पे. जी, कोशिश जारी है भाई. एंड भाई, मैं आपसे बहुत बहुत सालों से मेरी आपसे वाकफियत है, और मुझे जो एक बहुत फैसिनेटिंग आपकी एक एस्पेक्ट लगता है कि दैट यू लाइक टू make a difference in people's lives by making them smile, by making them happy. You're inherently an entertainer, someone who thinks, someone who understands, and still makes you laugh. What do you think is the importance of being an entertainer? इस पूरी दुनिया में everybody plays a part. There's a finance, there's judicial, there's political, there's social, and we are from the entertainment sector. Well, I feel it's a very, see, it's not a necessity, like roti, kapda, makan, whatever. But in a way, it has become kind of a necessity. Because, everybody at some point wants to get away from their daily grind, whatever job they may be in. They want to get away for those few moments, half an hour, 1 hour, 2 hours. Some people make it like, so I think as an industry, entertainment is a contributor. Yeah, it could be, like you put on an air conditioner in the heat. So it's like, okay, well, I'm relaxing for some time. So you need that air conditioner. So similarly, I think entertainment is like an air conditioner for your temperament, your mind, your to be to relax. I think that, or to make you think. It could go anyway. So entertainment could be just for time pass, like people quote, or it could be something which would make you think and say, okay, it's a point. I get the point, and that's something to think about. And you could have a perspective, a point of view. So I think it's a great industry, and I'm really happy to be a part of it. I think and to know that if, yeah, obviously you have to. It can't just be ha 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 ha. Somewhere you have to say there is a certain responsibility where you bring out certain aspects of what's happening in society, the good and the bad. I think it's important. But yes, obviously, it can't be. Certain things need to be said with a certain gravitas. So I can't make Mughal-e-Azam in a comedy. It's a story told with a certain gravitas. Similarly, if I want to speak about a mining disaster, obviously. But yes, I think as an industry, it's a wonderful industry, and it does its job. Like you said, whether you make you smile, bring a tear, make you think, it just arouses emotions, and you are a part of that, of arousing what emotions you want to arouse. हमारे इंडस्ट्री में बहुत से जो entertainers होते हैं, for example, people who have the ability to make you smile and make you laugh. So
that is maybe that is something, that's the only thing that they primarily do, or maybe some of them they do a lot of charity as well. Like Johnny Lever Saab, for example, he does amazing work as far as in his capacity as in terms of charity as well. लेकिन जैसे आपका जब एक पर्सनालिटी टाइप जब मैं देखता हूँ, तो आपको एक शायरी की आपको समझ कमाल की है. You understand what human emotions are all about. You are a thinking person. You express yourself. You have also worked in some very serious films as well. Like, just one example is coming to my mind is Fire, for example. When we look at you and you as an entertainer, like a Dhamal, for example, like out and out full blown entertainer, आपका जो context हो जाता है वो बड़ा unique हो जाता है. That you have an intellectual bent of mind which is very very refined. At the same time, you can entertain and make people laugh out loud. How do you combine all these facets? Like, it's not that you can choose everything you do. There are times when you need to do something because you don't want to rush. जंग लग जाता है. तो अब मैं बैठा रहूं, नहीं मैं वही करूंगा, मुझे ऐसा ही कुछ करना है. अब बैठा हूं 1 साल 2 साल, नहीं मिल रहा है. तो मेरे लिए क्या बहुत जरूरी मुझे लगता है कि जंग नहीं लगना चाहिए एज अ क्रिएटिव पर्सन. सो वेदर आई डू इट इन वॉइस ओवर्स, और आई डू समथिंग ऑन एडवर्टाइजिंग, या मैं फिल्म के थ्रू, या ओटीटी हो गया, या यू गॉट कीप योर गियर्स एक्टिव. तो उसमें मेरे लिए ये जरूरी होता है कि ये एक्टिविटी रखूं. हाँ, मैं खुद एक प्रोड्यूसर, मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस की थी, जो दोनों को दे वन द नेशनल अवार्ड फॉर documentary. One was Inshallah Football and one was Inshallah Kashmir. So I was a financier, producer of that, of those 2 documents. But beyond that, I was associated, or I am associated with Indian documentary, so it's like IDF, Indian Documentary Foundation, where I'm trying to see what can be done for documentaries in this country using them. So for me, it's important to be associated with positive movements which can make some difference to society where we are. Film is a huge influence, and I think it's, and obviously as an actor you can only do so much. As a producer and a director, you can choose what you want to say. As an actor, I can just be given an option. I got this. Would you like to be a part of this? So, my options are limited. Maybe as a director, tomorrow I want to direct or produce. I can then make what I want to make. But as of now, till wherever my life has been existing, whether I did a boogie woogie, which was for dance, and which was contributing in a really big way in the coming up of these so-called reality dance talent in this country, or being a part of certain small little things. So I just feel that, like when you said, being a part of so many things, jo aata hai, you try to associate yourself with something you would like to be associated with. Certain times you're doing a certain film, you think sometimes some things are commercial. हाँ ठीक है यार, ठीक है, I got to move on. किचन चलाना है तो ये एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं. A lot of times you say नहीं यार, ये है मजे का यार, ये तो करना चाहिए creatively, or sometimes it's like नहीं यार, this film is very well meaning, the intention behind this film. So there are various, you don't necessarily get a choice all the time. So, but like I've just been lucky to, be staying alive and staying afloat for so many years. So, alhamdulillah, by the grace of God. No, absolutely. And you still look the same as Mary Jung. All right. So, जावेद भाई, आपके करियर में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक जो मकूला रहा है वो है एग्जैक्टली सलाम नमस्ते में. आपके दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो हैं, उन्होंने डायरेक्ट करी थी फिल्म. और ना अभी सिद्धार्थ आनंद की जो फिल्म आई है पठान, फॉर एग्जांपल, और जिस तरीके की कामयाबी उसने हासिल करी है, हम लोग एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के मंजर सामने आए कि लोग थिएटर्स के अंदर इंजॉय कर रहे हैं, एक फेस्टिवल सा बन गया, एक तरीके का एक मोहब्बत से जोड़ने वाली बात एक फिल्म ने करी. कैसे आप इस फिनोमेनन को आप कैसे देखते हैं? इस ये जो मंजर सामने आया उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहता है ये हिंदुस्तान के बारे में? जो मुझे लगा एक जवाब था मेरे ख्याल से लोगों का
कि बॉस जोड़ने की बातें करो, तोड़ने की बातें मत करो। और अब हमको जोड़ने की बातों से जुड़ना है, डिक्टेट मत करो, जबरदस्ती मत करो, ये देखो, ये पहनो, ये खाओ। आई थिंक ये नैरेटिव थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इन सोशल मीडिया वगैरह। आई थिंक समवेयर पीपल फेल्ट नहीं यार, ये अच्छी फिल्म है, हमको देखनी है। आई मीन हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है यार, हम एंटरटेनमेंट, हम फिल्म देख रहे हैं। तो ये सेंटेंस बहुत पहले भी शायद तुम्हारे शो में मैंने बोला था, मैंने एक्चुअली आई यूज्ड इट इन माय चैनल वीडियो। हिंदुस्तान के लोगों को दो चीजों से बहुत लगाव है, एक है माँ और दूसरी है सिनेमा। और ये दो चीजों का इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के, खास तौर से हिंदुस्तान। फिल्म का जो इन्फ्लुएंस है ना, माँ के बाद ये सिनेमा आपको कैसे बिहेव करना, हेयर स्टाइल कैसा, लड़की कैसी, प्यार कैसा, वैल्यू सिस्टम क्या, पेट्रियाटिज्म, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंस बचपन से जब हम सिनेमा के साथ जुड़ते हैं। अब तो ऑफकोर्स बाय सिनेमा अब ओटीटी वेरिएंट्स आ गए हैं ना, माध्यम बदल गए, टेलीविजन हो गया, ओटीटी हो गया, और सो आई जस्ट फील पीपल लव कनेक्टिंग विद सिनेमा। और इट वाज अ वाइल्ड पीपल फेल नहीं यार, मतलब क्यों आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो एक फिल्म को? एक फिल्म है, एक एक्टर है, हम इतने सालों से इसको प्यार करते हैं, ही एंटरटेन्स अस, वी लव हिम। तो मतलब आप बिना फिल्म को देखे, फिल्म के लगने से पहले ही आप जजमेंट पास कर रहे हैं किसी चीज पर। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक को बोला कि यार प्लीज डू नॉट ट्राई टू डोमिनेट आवर थॉट्स, प्लीज डोंट डू दैट। आई थिंक मुझे ये लगा कि नहीं, एक जिद आ गई कि नहीं, हम तो देखेंगे, क्या कर लोगे, एक मुझे ऐसा लगा। हाँ, ऑब्वियसली द फिल्म वाज a great entertainer, and Shah Rukh did a great job. He had a new image in Avatar, which we haven't seen him in, and he did a fantastic job. And everybody, Deepika and John and Siddharth did his job fantastically. So I think as a package it worked, and it just I don't even see, but I feel yes, this whole trying to suppress thing became a plus point for the film. भाई इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जब फिल्म की कामयाबी के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एग्जैक्टली नहीं, बिकॉज And शाहरुख साहब honestly, I'm so happy. मुझे बड़ी खुशी हुई, शाहरुख के लिए भी खुशी हुई। I mean, I've known him. I did Oh Darling Hey India with him in 93, 94. उसके बाद I've not had the opportunity to work with him, but I really love him. I think he's the most charismatic, well-spoken guy we have. I mean, बच्चन साहब is different. बच्चन साहब का क्या है? बच्चन साहब एक दबदबा है, एक रुबाब है। शाहरुख is appealing, that whole, कि नहीं यार, ये प्यारा सा बंदा है जब वो बात करते हैं। So I just feel that it's reached out, and today, it's not just in India. It's like Germany and Africa and Middle East and Europe. People are watching it, and they're connecting Shah Rukh Khan with Bollywood very, very strongly. It's a good sign. It's a healthy sign. भाई मेरी अभी कोमल नाथा साहब से मेरी बात हुई थी, और उन्होंने कहा कि दैट शाहरुख खान कल्चरल एम्बेसडर हैं इंडिया के। बहुत से लोग हिंदुस्तान को जानते हैं शाहरुख खान की वजह से। अब्बास टायरवाला जो जो डायलॉग राइटर हैं पठान के, उन्होंने कहा कि दैट शाहरुख खान इज़ द बिगेस्ट कल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। आप कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को? See, like I said, movies are a very integral part of representing a culture and to some extent, a country, a people, a certain value system. So I just feel that yes, and I hate the term Bollywood. वो क्या करें, वो बन गया है यार एक Bollywood. But एक वो लग गया है टाइटल। But हाँ, because इसके थ्रू हमारी कंट्री का इंट्रोडक्शन एक तरह से होता है दूसरी कंट्री में, जब वो फिल्में देखते हैं कि अच्छा यार, इनका बेसिक कल्चर स्ट्रक्चर, इनके क्या है, कैसे इनका रहन सहन, इनकी किस तरह प्यार करते हैं, किस तरह अपने माँ बाप से रहते हैं, किस तरह इनका सोशल बिहेवियर है, इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है। आई थिंक दैट्स वे इन अ वे बॉलीवुड और इंडियन फिल्म represent our culture. They are great ambassadors, films. So from that perspective, yeah, and we are very unique in our style of narrative
as opposed to the international cinema of other countries. We are very unique, especially the song and dance element. So that's become a staple of our storytelling. And that's unique only to us. Nobody else does that. I mean, you'll have one Moulin Rouge, or you'll have one, which is the last one, which he made, Baz Luhrmann, Elvis. But those are one-off. Those are called musicals. हमारी तो हर picture musical है ना. So, from that perspective. So I think like you said, cinema is a great ambassador. And of course, the cinematic stars then start having an appeal across the board. So, like Shah Rukh is there, and Amir is there, Salman is there, of course. You're an amazing dancer yourself. जब आपने वो झूमे जो पठान पे फिल्म के एंड में जो थिएटर में जिस तरीके से लोग डांस कर रहे होते हैं आपने आई थिंक बहुत अरे मैंने देखा उसको. मैं गया था गेटी गैलेक्सी. अब गेटी गैलेक्सी इज अ सिंगल सिनेमा. हार्ड कोर जो फैन फॉलोइंग होती है वो गेटी गैलेक्सी में. So if you want to enjoy a movie and see how fans react, I think Getty Galaxy is an amazing cinema to go and experience. Half the film तो मुझे सुनाई नहीं दी, इतनी आवाज, And I went on the second or third day, I think, second day or so. आधी पिक्चर तो मुझे सुनाई नहीं दी. लोग चिल्ला रहे हैं, सीटी मार रहे हैं. एंड में तो सब पूरा वो स्क्रीन के आगे कुछ 100 लोग डांस कर रहे थे वहां पे, and it was एक्सपीरियंस इन अ वे. जस्ट फिल्म से ज्यादा वो एक एंड में वो जो एक इट वाज अ सेलिब्रेशन एंड यू कुड सी दैट, एंड आई वाज अमेज्ड. आई लव्ड इट. I was like, wow, man, this is cinema, and this is the audience we have in this country. They love, their cinema, their stars, and they connect with them. And it's totally, there's nothing to do with ये कौन से स्टेट का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का है, कौन से लैंग्वेज. नो मैन, दे जस्ट लव यू. दे लव व्हाट यू डू ऑन स्क्रीन and they identify with that, and I think that's beautiful. भाई एक और बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट जो सामने आ रहा है वो ये है कि ना अब इस पिक्चर ने दिल्ली यूपी में करीबन 100 करोड़ करे हैं. इट हैज़ डन अमेजिंगली वेल इन सिंगल स्क्रीन्स. IMAX में 2200 रुपये का इसका टिकट था. यूपी के बहुत से थिएटर्स जो हैं वो रिवाइव हो गए हैं. मालेगांव में कमाल के मंजर सामने आए हैं, अमरावती में आए हैं. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साउथ में जो हिंदी वर्जन है दैट हैज़ डन एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल. करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा जो है वो साउथ में उसने करे, एंड प्राइमरली द हिंदी वर्जन. जो हम लोग ये सब बातें सुनते रहते हैं कि साउथ, नॉर्थ, हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस, तो आप कैसे देखते हैं इसको कि दैट हिंदुस्तान की एक फिल्म जो है वो कहीं पर भी मतलब परफॉर्म अच्छा करती है एंड इट इज़ जस्ट कम्प्लीटली एम्ब्रेस्ड बाय एनीवन एंड एवरीवन. ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम जो बात हम जो 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 जो, जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब आप इसको देखते हैं एक अपने सामने, उसका मंजर अपने सामने देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? डज इट मेक यू फील हैप्पी इन अ वे? नहीं, देखो यार, मैं जब बचपन से बड़ा हो रहा था, ओब्वियसली मेरे फादर जो थे उन्होंने एक वक्त देखा पोस्ट पार्टीशन और फिल्मों का पोस्ट पार्टीशन, द ग्रोथ ऑफ सिनेमा, एंड ही वर्कड विद पीपल लाइक बिमल रॉय साहब एंड गुरुदत्त साहब एंड के आसिफ साहब एंड महबूब खान साहब, all these great sahabs. And he used to tell me the stories of how they looked at this whole, when you're saying unity in diversity, and it was beautiful whatever he narrated of his experiences with these people, and one never really thinks about it unless somebody points it out. I mean, Man Tadpat Hari Darshan Ko Aaj is one of the greatest bhajans written in Hindi cinema. It's composed by Naushad Saab, sung by Rafi Saab, I think written by, Shakil Badami or Majroor Saab or whatever, and enacted by Dilip Kumar. One never thinks of it. But when somebody points it out and says, yeah, man, I mean, this is true, what we call unity in diversity. This is how it is. And cinema has its own language and cinema has its own religion, So from that perspective, and this is what people identify with across the country. So like you said, Pathaan running, कि भाई हिंदी में भी देखी लोगों ने. हाँ, साउथ में ऑब्वियसली उनका एक लिमिटेशन जबान की है, वो we have to keep that in mind, because ठीक है यार, वो कोई लोग नहीं बोलते हिंदी,
नहीं समझ पाते। लेकिन ये अटेम्प्ट होना, और उसका हैदराबाद में कुछ लोग बोल लेते हैं हिंदी, अ, लेकिन ज्यादातर तेलंगाना में वगैरह में कम बोलते हैं हिंदी। लेकिन डबिंग के अलावा, लाइक यू सेड, यू पॉइंटेड आउट कि हिंदी में भी वहां इतनी चली। और वो काफी कुछ कहता है इसके बारे में कि लोग चाह रहे हैं कि यार, वो कह रहे हैं कि यार आप अच्छी फिल्म बनाओ ना, हम देखेंगे ना यार, आप बनाओ, हम वी आर देयर, विल वॉच, विल कम टू द सिनेमा, give us the stuff, give us, and we'll encourage it. So I think that was what I felt. That was beautiful. भाई भाई सिर्फ केरला में मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट 15 to 20 करोड़, मे बी मोर, केरला में बिजनेस किया है 15 से 20 करोड़ का हिंदी वर्जन। सो ना दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। आपने जगदीप साहब का आपने जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैंने आपके साथ में एक बहुत तवील सा एक इंटरव्यू किया जगदीप साहब से रिलेटेड। आपने मुझसे जिक्र किया था कि किस तरीके से पोस्ट पार्टीशन के जो एक सेकुलरिज्म के जो एक आइडियल्स थे वो कितना इम्पॉर्टेंट थे, मतलब उनके लिए उन्होंने अपने आसपास देखा, फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने देखा। अभी शाहरुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि दैट दीपिका अमर हैं, जॉन एंथनी हैं, और मैं अकबर हूँ, अमर अकबर एंथोनी, एंड हम लोग बेसिकली मिलकर मोहब्बत हम लोग बांट रहे हैं। ये जो एक खूबसूरती है, एक तरीके का बड़ा यूनिफॉर्म सा एक तरीके का एक जिसको कहते हैं मिलन अगर कहेंगे हिंदी के गानों के टर्म्स में, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, हाउ इंट्रिंसिक इज इट अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री? मेरे हिसाब से द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एवर, व्हाटएवर एनीबॉडी मे से। ये मैं एक और इंटरव्यू में कहा है, बट यहाँ फिर मैं आपके साथ रिपीट कर दूंगा ये, बिकॉज मैं मनमोहन देसाई साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक he contributed hugely in this whole national integration and bringing the people together and this unity in diversity का जो concept है. And he made those films with full conviction. And if you look at the film, के एक नाम भी देखो आप, किशन लाल एंड भारती, ये माँ और बाप है, ऐसे ही नहीं रखे नाम, कुछ सोच के रखे कि एक भारती और किशन लाल। अभी कहानी में नहीं जाऊंगा, एक पॉइंट है, देयर आर 2 पॉइंट्स इन द फिल्म व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वाज व्हेन शी इज इन हॉस्पिटल और ये तीनों भाई, नॉट नोइंग कि हम भाई हैं, नॉट नोइंग कि ये हमारी माँ है, एंड दे कम एंड गिव ब्लड टू दिस लेडी हु इज कॉल्ड भारती। और भारती में डायरेक्ट खून जा रहा है अमर का, अकबर का, एंथनी का, और भारती रिवाइव होती है। Now there's a symbolism in that, when he's saying it for the common man, and he said it not so subtly. It was pretty in your face, but that's the language people understand. You can't be very subtle in certain things. And he said, look, my audience is not a subtle audience. They don't want to be told. So one was that. Second is, आखिर में एक पॉइंट आता है जब विनोद खन्ना साहब इज रिमेम्बरिंग समथिंग, और वो डिगिंग, और कुछ बचपन में एक टॉय पिस्टल थी, वो कुछ करी थी, प्राण साहब कम्स एंड सेज, बाप की दी हुई पिस्तौल याद है, पिस्तौल देने वाला बाप याद नहीं, एंड देन सडनली इट कम्स बैक, ओहो अच्छा पप्पा, एंड देन Amar comes in, Akbar comes in, Anthony comes in, all they say, okay boss, we are brothers and this is the father. Now they know that their father is Kishan Lal, their mother is Bharti, but I am Amar, I am Akbar, I am Anthony. And when they get married in the end, Anthony gets married in the church, Akbar gets married in the mosque, Amar gets married in the temple, and they sing and dance and they live happily ever after into the sunset. Boss, what a statement that was at that time. Think about it. Absolutely. It's a very big statement. Right. So I'm just saying, today somewhere we are closing in instead of expanding. I think we just somehow तंग नजर हो रहे हैं। एक और भी चीज जो सामने आई काफी, स्पेशली अफगान्स का एक कहना था काफी लोगों का कि maybe in a long time we have been, this is the first time that we have been humanized in a film. We have been presented as victims, and we have been presented as people who are for humanity. Do you think that, जैसे आपने कहा कि सिनेमा का एक बहुत important medium है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी रीच होती है, एक
एक ईमानदार मैसेजिंग, एक रिस्पॉन्सिबल मैसेजिंग कितनी जरूरी है आपकी नजर में? नहीं, लाइक मैंने कहा ना यार, तोड़ने की बातें मत करो यार, जोड़ने की बातें करो। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहां it can light a fire or it can douse a fire. It's how you choose to make what you want to make, because it excites emotions. It can do a lot of things. I won't get into detail, but I'm just saying that there is a responsibility where you feel यार एक आग लगी हुई है। अब जिम्मेदारी हमारी ये हो जाती है कि आपको बुझाया कैसे जाए यार इसको। Let's bring people, let's get the love going, let's you know so I think what they tried in that, I really appreciated that, because देखो यार, आप सबको एक ब्रश से कैसे पेंट कर सकते हो यार। आप बोलो just because there are some bad apples, you can't call the entire orchard as bad, man. I mean, like, honestly speaking. So, and that is everywhere. आप किसी एक संस्था, दो संस्था या कुछ 5% or 10% also can't make up for 100%. No, they don't represent 100%. So from that perspective, I think what they did with that Afghan family coming in, I think it was really beautiful. It was really, and I really appreciated that, because you need to do that. Because there are beautiful people everywhere. There are innocent people everywhere. Yes, there are the terrorists. There are the zalim, but mazloom बहुत ज्यादा हैं जालिमों से. So, I think it's important that we highlight them all. Yeah, but thank you very much for your time. Always lovely talking to you. Wish you all the best. Wish you all the best. Thank what you. you're doing, and you've been doing a great job all these years, and hopefully that you go wherever you want next step. Wish you success. Thank you so much. Thank you. Take care. Yeah.